بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم چیپٹر 3 فورسز اینڈ موشن کے کنسیپچول کوسچنس اور نومیریکلس کریں گے. آبجیکٹیو ہم آلریڈی کر چکے ہیں. تو یہ آج کا کنسیپچول کوسچن ہے: اف یو آر رائڈنگ آن دا ٹرین دیٹ اسپیڈز past another train moving in the same directions and on an adjacent track. It appears that the other train is moving backward. Why? آپ سب کا یہ ڈیلی لائف کا ایکسپیرینس ہوگا کہ اگر آپ ٹرین پہ، کار پہ موو کر رہے ہیں اور فاسٹلی موو کر رہے ہیں تو روڈ پہ لگے ہوئے درخت ہے، پولز ہیں، بجلی کے پولز، کیسے لگتا ہے کہ جیسے موونگ ٹوورڈز you. If you focus on that trees and poles of electricity تو کیا فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ درخت اور پول جو ہے نا آپ کی طرف آ رہے ہیں، حالانکہ فزیکلی آپ انہیں کراس کر رہے ہیں. you are moving towards that. اب اس میں ایک کنسپٹ آ جاتا ہے ریلیٹیو موشن آف ون آبجیکٹ ود ریسپیکٹ ٹو دی ادر. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی آپ ایک فریم کے اندر ہیں، آپ کار میں ہیں جی، آپ کا ایک فریم آف ریفرنس ہے. آپ اس کے تھرو، ونڈو کے تھرو، شیشے کے تھرو آپ آبزرو کر رہے ہیں دوسری چیز کو. جیسے میں نے کہا درخت کو دیکھ رہے ہیں، پول کو دیکھ رہے ہیں. تو ڈسٹینس یا ڈسپلیسمنٹ بٹوین دا پول اینڈ دا کار دیٹ از گون ڈیکریزنگ. تو ایسے لگتا ہے کہ وہ درخت جو ہے یا پول جو ہے دیٹ از موونگ ٹوورڈز دی کار. اسے کہتے ہیں ریلیٹیو موشن. ڈسپلیسمنٹ بٹوین دا کار اینڈ دا پول اور دا ٹریز ڈیکریزز ود دا ٹائم، اور ایز اے ریزلٹ یہ فیل ہو رہا ہے کہ دیٹ ٹریز آر موونگ ٹوورڈز دا کار. حالانکہ پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا. یہی بات ٹرین ورسز ٹرین کی بھی ہے. ایک ہی ٹریک کے اوپر اگر ایک ٹرین کھڑی ہے، دوسری موو کرتی ہے ان دی فارورڈ ڈائریکشنز، اور آپ ٹرین کے اندر ہیں اور آپ دوسری ٹرین کو ڈائریکٹ دیکھیں اور کسی چیز کو نہیں دیکھنا، تو کیا فیل ہوگا کہ وہ جو ٹرین ہے دیٹ از موونگ ان اپوزٹ ڈائریکشنز. تو دس از آل بیکاز آف کوسچن نمبر 1 ہے کنسیپچول کوسچنس کا. دس از all because of relative motion of an object with respect to the other. جیسے اگر دو چیزیں ایک ساتھ موو کر رہی ہیں، with the velocity v، دونوں کی velocity v ہے، so these travel equal distance. تو ایک دوسرے کے ریسپیکٹو اگر ان کا شروع میں اگر وہ پیرلل ہیں تو کیا محسوس ہوگا؟ دیر از نو چینج ان دا پوزیشن آف ون ود ریسپیکٹ ٹو دی ادر. ٹو باڈیز آر موونگ، ٹو کارز آر موونگ، ٹو ٹرینز آر موونگ ان دا سیم ڈائریکشن ود دا سیم ویلوسٹی. تو ایٹ ٹی زیرو پہ جو ان کی پوزیشن ہے سیم از دا پوزیشن ایٹ اینی ٹائم ٹی. سو دیر از نو چینج ان پوزیشنس. تو کیا لگے گا when there is a no change in positions, no displacement between the two, it means their relative velocity is zero. V relative is v minus v dash, and that is equal to 0. Both are look like a rest conditions. لیکن اگر ایک موو کر رہی ہے with the velocity اور second is at rest، سیکنڈ کی ویلاسٹی جو ہے وہ زیرو ہے، تو وی ریلیٹیو جو بنے گا وی مائنس وی ڈیش. تو وی از اکول ٹو وی آر سٹنگ ان اے ٹرین وچ اسٹارٹس موونگ ود certain velocity and covers some displacement in the
direction of velocity. But we see the other train and feels that it is moving opposite direction because the observer in its own frame cannot detect its motion but feels that other train is moving in opposite direction because of the change in displacement between the trains. This is all because of the relative motion of an object with respect to the other object. We are sitting in a train which starts moving with certain velocity and covers some displacement in the direction of the velocity, but we see the other train and feel that it is moving in opposite direction because the observer in its own frame cannot detect its motion but feels that the other train is moving in opposite direction because of the change in displacement between the trains. तो ये डेली लाइफ की बातें हैं, आपको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, बहरहाल इतना सा लिख दें. सेकेंड क्वेश्चन है, can a velocity of the body reverse the direction when the acceleration is constant? If you think so, give an example. Question number 2. This is possible when we throw the ball in upward direction. That is, when the ball moves upward, its velocity decreases till become 0 and it turns back. Now its velocity is go on increasing. In both the flights, acceleration A is equal to G, that is acceleration is constant and body and ball reverse its direction from the top. ये velocity है लेकिन इसमें acceleration G के बराबर है और जब बॉडी डाउन आ रही है V2 है लेकिन acceleration जो है वो भी G के बराबर है. तो accelerations की एक ही अमाउंट 9.8 और डाउनवर्ड है जबकि वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है. तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज. गेंद है और बुलेट को आप फायर कर देते हैं तो वर्टिकली अपवर्ड, तो वो अपनी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स करती हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन यू स्टैंड स्टिल ऑन द ग्राउंड्स, हाउ लार्ज द फोर्स डज द ग्राउंड एक्सर्ट ऑन यू एंड व्हाई डज नॉट दिस फोर्स मेक यू राइज अप इनटू द एयर. मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एक फोर्स है मेरा वेट विच इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये फर्श जहाँ मैं खड़ा हूँ वो यकीनन फोर्स लगाता है, रिएक्शनली फोर्स, वेरी इक्वल बट अपोजिट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट ऑफ मी. लेकिन वो फोर्स जो रिएक्शनल फोर्स है वो इस काबिल नहीं होती कि वो मुझे अपवर्ड थ्रो कर दे बिकॉज ऑफ माई वेट. ये इस काबिल नहीं होती कि मुझे अपवर्ड थ्रो कर दे. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन वी स्टैंड स्टिल ऑन द ग्राउंड we exert force very equal to weight, force of gravity भी कह सकते हो. When we stand still on the ground, we exert force very equal to own weight, that is force of gravity. As a reaction, ground exert equal but opposite force on the body, but this force cannot move the body upward because of weight of the body acting vertically downward. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 है, a man standing on the top of the tower throw the ball vertically upward with certain velocity. He also throw another ball vertically downward with the same speed, neglecting a resistance. Which ball will hit the grounds with higher speed?
Question number 4. Both the balls will hit the ground with same speed because the ball which is thrown upward reaches the top and return. When it reaches the top of the tower, it has same speed as that of the other moving downward under the action of gravity. So finally both the balls attain equal velocity just before hitting the ground. Now question number 5. The cricket coach explains the follow through with the shot will make the ball travel the greater distance. Explain the reasoning in terms of impulse momentum theorem. ये follow through एक टर्म है, follow through बच्चे एक टर्म है और इसका मतलब होता है कि बैट जो है बॉल के साथ टच करे और ज़्यादा देर तक उसके साथ रहे. बैट बॉल के साथ ज़्यादा देर तक जो है वो गेंद के साथ रहे. मीन डेल्टा टी हम बढ़ाना चाहते हैं तो डेल्टा टी टाइम ऑफ कंटेक्ट ऑफ द बैट विद द बॉल वो जब ज़्यादा हो जाएगा तो इम्पल्स बढ़ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम बढ़ जाएगा और बॉल की वेलोसिटी बढ़ जाएगी एंड दैट कैन ट्रेवल द लॉन्ग डिस्टेंस. द टर्म फॉलो थ्रू मीन बैट शॉट लेते हैं. क्वेश्चन 5. द टर्म follow through means the time of contact between the ball, between the bat and the ball should be increased. ये है टर्म फॉलो थ्रू. प्लेयर है, उसका बैट बॉल के साथ ज़्यादा देर इन कंटेक्ट रहे तो अकॉर्डिंग टू impulse momentum theorem, impulse force into delta t and that is equal to delta p. From this equation we see that when we increase delta t, impulse increases, so momentum increases, that is velocity because of increase in velocity. So ball travels longer distance, so the ball will travel longer distance. अब है question number 6. When we release an inflated but untied balloons, why does it fly across the room? This is very according to the law of conservation of momentum. That is, initial momentum is equal to final momentum. Initial momentum of the inflated balloon will be 0. When we release it, air escape out of the balloon and gain momentum. To counter that momentum, the balloon flies off in opposite direction. Now question number 7. Question number 7. Modern cars are not rigid but designed to have
crumple zones, irregular fold that collapse upon impact. What is the advantage of this new designs? इसमें the modern cars are not rigid, mean solid state, especially ये जो क्या कहते हैं इसका बम्पर है, स्पेशली आगे पीछे से जो बम्पर होते हैं, आज मौजूदा दौर के अंदर वो बम्पर जो हैं वो फ्लेक्सिबल रखे जाते हैं, सॉलिड नहीं रखे जाते। अब इसका एडवांटेज क्या होता है कि सॉलिड बॉडीज़ का जब कोलिजन होता है तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत शॉर्ट होता है, जिससे इम्पल्सिव फोर्स बहुत बढ़ जाती है, इम्पल्सिव फोर्स बहुत बढ़ जाती है, और एज अ रिज़ल्ट उसका जो नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अब मौजूदा दौर के अंदर जो बम्पर हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, नंबर वन, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो जो टाइम ऑफ कांटेक्ट होता है वो बढ़ जाता है। यहाँ टाइम ऑफ कांटेक्ट के बढ़ने की वजह से जो इफ़ेक्टिव फोर्स होती है वो कम हो जाती है, और इफ़ेक्टिव फोर्स के कम होने की वजह से उतना नुकसान नहीं होता, ना गाड़ी का इतना नुकसान होता है और ना जो पैसेंजर्स हैं उनका को ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है। दिस इज द एडवांटेज इन मॉडर्न कार्स crumple zones, that is bumper, are made flexible when collision takes place. Then time of contact delta t increases. As a result, effect of the force decreases. That is, car will so there will be less damage of the car and passengers also. Next question, number 8. Why we can hit the long sixer in a cricket match rather than if we toss a ball for ourselves? Why we can hit the long sixer in a cricket match rather than if we toss a ball for ourselves? In the cricket match, the player tries to hit the ball forcefully at an angle 45 degree. At this angle, range will be maximum. There is a possibility of sixer. There is a possibility of the sixer, which is impossible when we toss the ball for ourselves. Now question number 9. An aeroplane while traveling horizontally dropped a bomb. When it was exactly above the target, the bomb missed the target. Explain. We know that the initial velocity of the bomb will be equal to the velocity of the aeroplane, which is horizontally, flying horizontally. When the bomb is fired, now it is a freely falling body with the horizontal component of velocity also, with the
horizontal component of velocity. So it follows the projectile motion. It follows the projectile motion. That's why if the bomb is fired when the aeroplane is exactly above the target, because of its horizontal component of velocity, it moves forward and miss the target and miss the target. Question number 10. Calculate the angle of projections for which the kinetic energy at the summit is equal to 1/4 of its kinetic energy at the point of projections. Calculate the angle theta. Theta is unknown for this summit. So here is the velocity vi, kinetic energy I, और यहाँ kinetic energy Vix velocity है और ये final kinetic energy. According to the questions, kinetic energy at summit point is equal to 1/4 of initial kinetic energy. So half mvx square is equal to 1/4 half mvi square. Half mvi cos theta is equal to 1/4 half mvi square. Again we can write half mvi square cos square theta is equal to 1/4 half mvi square. Then cos square theta is equal to 1/4 cos theta is equal to 1/2 theta is equal to cos inverse 1/2 is equal to 60 degree. So if the angle of projection is 60 degree, then kinetic energy at the top will be 1/4 of the kinetic energy at the initial point. Next question number 11. For any specific velocity of the projections, the maximum range is equal to 4 times the corresponding height. 4 times the maximum height. For maximum range, angle of projection will be 45. Now vi square by g is equal to 4 times vi square sin square theta upon 2g. ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है, ये मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है, और vi square by g is equal to 4 times vi square by और sin 45 इसका भी स्क्वायर. 2 2s are 4, तो इसमें vi स्क्वायर कैंसल, g कैंसल, 1 is equal to 2, बल्कि इसको मैं इधर ले आता हूँ. 1/2 is sin 45 का स्क्वायर. What I am doing? So this is equal to 2 vi square by g sin 45 इसका भी स्क्वायर, and this is 2 vi square by g 0.707 इसका स्क्वायर, 2 vi square by g here is 0.5 and is equal to vi square by g. Hence proved
क्या हमने प्रूफ किया, मैक्सिमम रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट से 4 टाइम बड़ी होगी अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो कितना हो, 45 का एंगल। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 है तो मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम हाइट से 4 गुना 4 टाइम ज़्यादा होगी। यस, नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल फॉर विच मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड कोरस्पॉन्डिंग रेंजेस आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर है 12 अकॉर्डिंग टू the question, range height maximum, or this is vi square by g sine 2 theta, and this is vi square sine square theta upon 2g, then sine 2 theta is equal to sine square theta upon 2, this is 2 sine theta cos theta is equal to sine square theta by 2, then 2 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। यहाँ हमने ये कैंसिल किया इससे, और ये कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, और साइन थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू 4, ये टेंजेंट थीटा आ गया 4, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4, एंड दिस इज 76 डिग्री। इस एंगल के ऊपर अगर हम प्रोजेक्टाइल्स को प्रोजेक्ट करते हैं, फायर करते हैं, तो रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी।